Success in life is not about working hard alone. It's about who you know and what you create together. 10 years ago, I had this nagging intuition that success in life is equal to the people you meet plus what you create together. Science has validated this today. But let me tell you something. Relationships are like muscles. The more you work on them, the stronger they become. The fact is, relationships are solidified by trust. Institutions are built on it. And trust, you gain it not by asking what people can do for you, but what you can do for others. एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपका बॉस आपको अपने ऑफिस में बुला के कहे सॉरी टू टेल यू बट यू आर बीइंग टर्मिनेटेड. बहुत मुश्किल होगा, बट इट वुड बी बेटर इफ यू कुड मेक अ कॉल, वॉक इनटू समवन एल्सेस ऑफिस एंड ही सेज कब से कह रहा था मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले, कॉन्ग्रेचुलेशंस. Job security, it's a thing of the past. Experience, hard work, talent, they won't save you in tough times. But your extended circle of friends and associates, that's your safety net. So when you need a job, advice, help, or even just hope, there's one place you can always turn your relationships. Remember, success is not just what you do, it's what you build together with the people you meet. Do you want to know the one thing successful people never do? They do not keep score when it comes to relationships. There is no need to ponder whether it's their lunch or yours, or to keep track of favors done and owed. किसी को फर्क नहीं पड़ता इनसे. It's better to give before you receive and never keep score. Because if your interactions are ruled by generosity, trust me, your rewards will follow. Here is the thing. Contributing is like miracle growth hack for your network. जब आप अपने relationships में टाइम, पैसा और एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तब आपके रिलेशनशिप्स फ्लरिश करेंगे. यू नीड टू टेक एक्शन. इट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप एक्शन प्लान फॉर अ रीजन. Just like preparing for a marathon, you can't just sit and wait. You have to jog every day, put in the effort, and reach out every single day. And while you are out there connecting, be sincere. लोग आपको आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए याद रखते हैं. That's how you build real lasting relationships. लोग क्या गलती करते हैं, वो नेटवर्किंग करना तब स्टार्ट करेंगे जब उन्हें कोई ज़रूरत हो. बट दैट्स नॉट हाउ द बिगेस्ट सर्कल्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, mentors, and friends are built. The truth is, you need to start reaching out long before you need anything at all. Have you thought about where the top people in your industry hang out? Once you know, the next step is simple. Go hang out with them. Surround yourself with the right people long before you need them. भाई वेट करना बंद करो. Start giving, start reaching out, and start building those genuine connections today. You feel unproven now, but what if I told you the key to breaking in is right under your nose? Today you might feel unproven, and breaking into the right circles seems tough. But trust me, eventually you will have a growing circle of people who have seen your work and believe in you. Here is how to start right now. Create a project at your company that forces you to learn new skills and meet new people. Take leadership positions in your hobbies or outside organizations. Join your local alumni club and hang out with people doing the jobs you want. Enroll in a class that relates to the job you have or the job you want. Around you, there are golden opportunities to develop relationships. जिन लोगों को आप जानते हो, जिन लोगों को वो जानते हैं जिन्हें आप जानते हो, और वो लोग और भी लोगों को जानते हैं. And guess what? The people around you are more likely to help you if they already know you and like you. So start gardening your network now, and you will uncover treasures in your own backyard you never thought existed. Seize this very minute. Boldness has genius power and magic in it. I had observed that audacity was often the only thing separating two equally talented men and their job titles. Networking feels like dating, scary, uncertain, and full of rejection. But what if I told you the risk is worth it? Audacity in networking has the same fears and pitfalls as dating. I'll admit it, I was never that great at dating. But when it comes to business networking, I have learned a thing or two. आज भी जब मैं किसी नए इंसान से अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ, हमेशा एक fear of rejection मन में होता है. It never goes away. But here is the thing. Either I ask or I fail. The choice is not between success and failure. It's between risking something and striving for it, or risking nothing and staying in mediocrity. Let's be real.
हम लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं। जो लोग शाय होते हैं वो शाय लोगों को ढूंढते हैं। Outgoing people, they form their own groups. But we all know that one person who seems to engage others without any fear. Here's the truth: every hobby, every activity is an opportunity to get involved. Whether it is stamp collecting, singing, sports, or literature, there is always a chance to meet new people. So why not set a goal for yourself? Meet one new person a week. It does not matter where or with whom. Introduce yourself to someone on the bus, say hello to someone at a bar, or suggest a coffee meeting with someone you have connected with online but never met in person. The key is just take that first step. Remember, it's not about being fearless, it's about taking action despite the fear. The boldness you show today will define the connections and opportunities you create tomorrow. So, what's stopping you? This week, go out there and introduce yourself to just one new person. You might be surprised at the doors it opens. Want to build a network you can truly rely on? It's not about how many people you know, it's about how you connect. When you look back on your career and life, you want to see a web of friendships you can rely on, not the ashes of bad encounters. Yet most people have not figured out one simple truth. It's better to spend time with fewer people and have meaningful conversations rather than trying to talk to everyone and losing their respect in the process. Of course, gossip might seem like an easy way to make connections. Most people love it, and it can give you some quick attention. But here's the catch: gossip never helps you in the long run. Eventually, people will catch that you are not someone to be trusted, and the well of information will run dry. So, who are the real stars in today's digital world? They are not the ones spreading gossip or chasing shallow connections. They are the writers, bloggers, and creators who provide value information, creative content, links, and even empathy. These people build communities of like minded individuals by giving, not by tearing others down. And here is a golden rule: never treat people under you poorly. Sooner or later, some of them will become the ones over you. If you are not making real friends while connecting, you will be left dealing with people who do not care much about what happens to you. So, what's the secret to meaningful connections? Find out what's important to others, their hobbies, challenges, and goals, both inside their business and outside of it. Build trust, provide value, and avoid the traps of gossip and shallow networking. Want to build a web of friendships you can rely on? Start connecting with authenticity today, one meaningful conversation at a time. नेक्स्ट मीटिंग में जाने से पहले जिससे मिलने जा रहे हो उसके बारे में गूगल करके जाओ। एक क्विक गूगल सर्च सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये आपको इंसाइट देता है कि कोई ऑनलाइन कितना एक्टिव है, उन्हें क्या पसंद है और कितनी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिकली शेयर करते हैं। लेकिन यही नहीं रुकता, गूगल के बाद लिंक्डइन पर जाओ, उनके कनेक्शन में घुसो, जिन ग्रुप्स में वो हैं और उनके समरी पर ध्यान दो। ये आपको स्नैपशॉट देगा कि वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्राउड हैं और प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं। ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट करने के लिए गोल्ड है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो रीजन वाइज कॉल शीट्स बनाएं। लोग जिन्हें आप जानते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग जिन्हें आप जानना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सिर्फ एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजकर कितनी नई कॉन्वर्सेशंस शुरू कर सकते हो। ये लोग हेड्स ऑफ स्टेट, मीडिया, मोगल्स या आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी जो आपकी इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करता हो। अगर आप ऑर्गेनाइज और फोकस्ड हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि कोई भी ट्रूली आउट ऑफ रीच नहीं है। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा और ये ठीक भी है। अपने ईगो को साइड में रखो और रीच आउट करो। ट्रिक ये है कि उन्हें तब पकड़ो जब वो कम बिजी हो, जैसे 8 AM या 6:30 PM। ये वो टाइम है जब वो टिपिकल 9 to 5 की स्ट्रेस में नहीं होते और खुद फ़ोन उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप फाइनली उन्हें फ़ोन पर पाते हो तो वार्म कॉलिंग के 4 रूल्स यूज करो। पहला, किसी फैमिलियर पर्सन या इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर क्रेडिबिलिटी दिखाओ। 2, अपना वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली बताओ, समझाओ कि आप उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। 3, अर्जेंसी और कन्वीनियंस दिखाओ बाय ऑफरिंग टू मीट ऑन देयर टर्म्स। 4, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहो और अगर तुरंत हाँ ना मिले तो फॉलो अप सिक्योर करो। सिर्फ 15 सेकंड्स में आप खुद को हर दूसरे कॉलर से अलग कर सकते हो।
एक सिंपल वेल स्ट्रक्चर्ड वार्म पोल के साथ। याद रखें, नेटवर्किंग लक के बारे में नहीं है, ये प्रिपरेशन, परसिस्टेंस और सही तरीके से कनेक्ट करने के बारे में है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट या हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि हर दिन कम से कम 50 लोगों से बात करना है। क्रेजी लगता है ना? लेकिन मेरी एक बात मानो, ये काम करता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता है, उतनी तेजी से वो ग्रो करता है। और एक और बात, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी रातों रात नहीं बनती। उसके लिए टाइम और परसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आप जॉबलेस हो, तो दूसरे जॉब सीकर्स के साथ टाइम वेस्ट मत करो। इंस्टेंट जॉब गिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करो। चाहे रेस हो, रिलीजन हो, जेंडर हो या शेयर्ड इंटरेस्ट हो, ये सब रिलेशनल ग्लू है जो लोगों को जोड़ता है। किसी नए इंसान के साथ विद 15 मिनट्स और एक कप कॉफी वंडर्स कर सकती है। या फिर किसी को इनवाइट करो वर्कआउट शेयर करने के लिए, या कोई हॉबी या फिर चेस का गेम भी। नेटवर्किंग हमेशा ऑफिस में ही नहीं होती। और एक टिप जो आपको अलग दिखाएगी, हैंड रिटन थैंक यू नोट लिखो। आज के डिजिटल ज़माने में ये सबसे आसान तरीका है किसी का ध्यान खींचने का और दिखाने का कि आप केयर करते हो। ये रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूटी क्रिएट करता है और लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। याद रखना, एक ग्रेट थैंक यू नोट में ये सब होना चाहिए। आपकी कॉन्वर्सेशन से कुछ मेमोरेबल, कोई शेयर जोक या फनी मोमेंट, दोनों की तरफ से किए गए कमिटमेंट्स को रीअफर्म करो। ब्रीफ और पर्सनल हो, उन्हें हमेशा नाम से एड्रेस करो। ईमेल या डायरेक्ट मैसेजेस भेजो फॉर अ पर्सनल टच। मीटिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके भेज दो। हॉलीडेज का वेट मत करो। टाइमली फॉलोअप्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फाइनली, जो इंसान ने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, उन्हें फॉलो अप करना मत भूलना। उन्हें बताओ कि सब कैसे गया और थैंक यू बोलो उन्हें कनेक्ट कराने के लिए। इससे आपके पूरे नेटवर्क में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। फॉलो अप्स को ऑटोमेटिक बना दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको भी नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई आपका नाम नहीं भूलेगा। Ever noticed that one person who seems to know everyone and everyone knows them? What's their secret? It's not about knowing thousands of people. It's about knowing people across different worlds and knowing them well enough to call on them. Let's break it down. Super connectors are everywhere. Headhunters, lobbyists, fundraisers, PR specialists, politicians, journalists, authors, and more. These people thrive because they know how to connect the dots between relationships. Headhunters, they connect job seekers with jobs. Lobbyists, they are persuasive and well informed masters at building networks. Fundraisers follow the money. That's their mantra. PR people, they hustle every day, building relationships to push their clients' stories. Politicians and journalists always networking, always making those crucial connections. And now, with social media, even authors and bloggers have joined the ranks of super connectors. Want to connect with them, become their most charming stalker, respectfully, of course. But there's a key. It's not just about knowing people, it's about staying in touch regularly. What I call pinging. Reach out via email, phone, or even face to face coffee. Want to turn a contact into a friend? Two face to face meetings outside of the office. Want to maintain a secondary relationship? Ping them 2 to 3 times a year. Because here is the truth, power today comes from sharing information, not withholding it. Be generous, be vulnerable, and stay accountable. That's how you build trust. So start pinging, build your network, stay connected, and make those around you successful. Remember, fortune favors the network mind. Time to get busy and become a super connector. Hit like, share, and follow for more tips on building powerful network and unlocking your social potential.